बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने कोर्स सेट टोपोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है MTH251, इसमें लेक्चर नंबर 6 को स्टडी करेंगे। हम इससे पहले के लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट X के ऊपर किसी भी मीट्रिक को या डिस्टेंस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। जब हम देखते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट X लें तो उस पर एक फंक्शन D फ्रॉम X क्रॉस X टू R डिफाइन करते हैं, जो कि D1, D2, D3 को सेटिस्फाई करता हो, तो फिर इस फंक्शन को हम मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ओपन सेट को in the metric space and give some examples of open sets. लेक्चर नंबर 5 में हमने ओपन स्फीयर को डिफाइन किया था किसी भी मीट्रिक स्पेस में, और इस लेक्चर में हम ओपन सेट्स को डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर हम कुछ इससे रिलेटेड ओपन सेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, रिजल्ट्स स्टेट करेंगे और प्रूव करेंगे। तो वी प्रूव दैट XD be a metric space, then empty set and the ground set are open sets. फिर हम देखेंगे कि XD be a metric space, then each open sphere is an open set. थर्ड नंबर पर हम देखेंगे कि if XD is a metric space and G is a subset of X, then it is open if and only if it is the union of open spheres. फोर्थ प्रॉब्लम जिसको हम डील करेंगे, that is let XD be a metric space, then union of any number of open sets is open, and again हम देखेंगे कि intersection of finite number of open sets in a metric space is again open. So first of all we define open set in metric space. आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 5 में हमने ओपन स्फीयर को डिफाइन किया था। किसी भी मीट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर को डिफाइन किया था। ओपन सेट को डिफाइन करने के लिए हमें ओपन स्फीयर की डेफिनेशन को रिकॉल करना पड़ेगा। आपको याद है कि जिस वक्त हम किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट ओपन स्फीयर फाइंड करते हैं तो पॉइंट X या X नॉट ग्राउंड सेट का फिक्स करते हैं और एक रेडियस R ग्रेटर देन 0 लेते हैं। फिर SR X नॉट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्राउंड सेट होती है, ऐसे एलिमेंट्स X बिलोंगिंग X जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट X नॉट लेस देन R हो। सो ओपन सेट की डेफिनेशन को हम देखते हैं। लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस। सो this XD in this case is a metric space. You know, this is a metric space. This is ground set X together with a distance function D defined upon this X. This is a metric space. This square we consider here as an abstract set with elements. This is a metric space with many elements. We fix a point X, then a set A. This is a set A in the metric space. This is a non-empty set A, or it can be an empty set as well, but here for the time being we just assume that it is a non-empty set. A is a subset of X, then A is called open set if for every X belongs to A we can find an open sphere SRX which is again contained in A. So if this relation holds, for every X belongs to A, we can find an open sphere with center at X and radius R, such that this open sphere SRX is contained in the set A. Then the set A is said to be an open set. So dear students, इस बात को आप याद रखें कि A के ओपन होने के लिए this is a subset of the ground set X. This is open if
So this is if for each x belongs to A, we can find an open sphere of radius r with center at x such that this open sphere must be lying within this set A. If this happens for every, this every is important. If it is true for every element of A, कि कोई भी सेट A ओपन होगा अगर इस A के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकें कि वो ओपन स्फीयर वापस इस सेट A के अंदर लाई कर जाए। अगर ये ओपन स्फीयर इस सेट A में लाई कर जाएगा तो फिर इस सेट A को हम कहेंगे कि ये ओपन सेट है। किसी भी मीट्रिक स्पेस में एक सेट के ओपन होने के लिए जरूरी है कि उस सेट के हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ओपन स्फीयर SRX फाइंड कर सकें कि वो ओपन स्फीयर उस सेट A के अंदर लाई करे, तो फिर हम इस सेट A को कहेंगे कि ये ओपन सेट है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A वी कैन फाइंड if there exists, then A is called open set. If for every x belongs to A, there exists, if for every x belongs to A, there exists SRX such that this SRX is contained. So this, looking at the picture, this is a ground set, this x is a ground set, this is a ground set together with a distance function, so it is a metric space. We are taking a set A in this x. We are looking whether this is open or not. हम इसका आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट के अगेंस्ट हम कोई ओपन स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। S ओपन स्फीयर SRX नॉट जो कि वापस इस सेट A के अंदर लाई करता हो। तो अगर हम सेट A के हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकें जो कि वापस इस सेट A के अंदर लाई करता हो, दिस मस्ट बी लाइंग विद इन A। अगर इस सेट A के अंदर लाई करता हो तो फिर हम बोलेंगे कि ये सेट A ओपन है। So this is for each, for every, this is important for every x belongs to A, there exists an open sphere with center at x and radius r such that this SRX is contained in A, then the set A is called an open set. I hope कि आपने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि किसी भी मीट्रिक स्पेस में दिया हुआ कोई सेट A ओपन है या नहीं। सो इस एग्जाम्पल में हमें मीट्रिक स्पेस RD विद द यूजुअल मीट्रिक दी गई है। आपको खूब याद है कि जिस वक्त भी यूजुअल मीट्रिक होती है तो वहां पर जो डिस्टेंस फंक्शन है यूजुअल मीट्रिक इन R जब लेंगे तो ये R क्रॉस R से R पर, और इसमें डिस्टेंसेस जो होंगे वो डिफाइन किए जाएंगे फॉर एवरी एडेड पेयर xy बिलोंगिंग R। दिस इज इक्वल टू x माइनस y मॉडुलस। सो दिस इज बाय द डेफिनेशन of the usual metric on R. Then 0, 1 is an open set. So this is the first part, whereas 0 open and 1 closed, this is open closed interval, is not an open set. So first हम verify करते हैं कि क्या 0, 1 open set इस metric space RD with the usual metric क्या ये open set है। अगर आप नोटिस करें तो इस जगह पर हमारे पास जो ग्राउंड सेट है वो
पूरी की पूरी रियल लाइन है. सो दिस इज आवर x which is equal to r, and we are taking set A as the open interval 0 and 1. This is our set A. Our set A in this case is equal to open interval 0, 1. We know that in the open interval endpoints are not member of the set, and all other points which are inside here are members of this set A. तो दिस इज a यूजुअल मीट्रिक. लिहाजा इसको चेक करने के लिए कि क्या ये ओपन है, हमने ये देखना है कि क्या ये ओपन है. दिस इज आवर क्वेश्चन कि वेदर इट इज ओपन. हम ये देखेंगे कि क्या इस सेट के हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कोई ओपन स्फीयर फाइंड कर सकते हैं जो विद इन दिस ए लाई करता हो. अगर हम इस सेट ए के हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन स्फीयर फाइंड कर सकें जो कि वापस इस सेट ए में लाई करता हो, तो फिर हमारा डिसीजन ये होगा कि ये सेट हमारे पास ओपन सेट है. लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि इस सेट का कोई आर्बिट्रारी पॉइंट चूज करते हैं. इन दिस केस लेट ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0, 1, जिसे हम चेक करना चाहते हैं कि, और इसका एक आर्बिट्रारी पॉइंट देते हैं. लेट x नॉट बिलोंग्स टू a. दिस इज एनी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल 0, 1. So suppose here it is. Suppose this is the point x naught. Let epsilon be greater than 0 is a negligible small quantity. We know in usual metric on R, in usual metric on R, जो ओपन स्फीयर्स होते हैं, ओपन स्फीयर्स आर ओपन इंटरवल्स. सो इस एक्स नॉट का अगर एप्सिलॉन रेडियस का मैं ओपन स्फीयर लूं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द यूजुअल मीट्रिक दिस विल बी इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन. Right? So here it will be equal to the x naught minus epsilon and this point is x naught this point is x naught plus epsilon. Right? This point is x naught minus epsilon and this point is x naught plus epsilon. So this open sphere is obviously contained in A again. So this gives for every x belonging this open interval 0, 1, we can find there exist R greater than 0 such that this S R x naught x, which is actually equal to x minus R and x plus R, which is contained in A. We know that in the usual metric these open intervals are open spheres and open spheres are open
intervals conversely. So corresponding to each point of this set A, we can find an open sphere with center at X and radius R, which entirely lies in A. Therefore, this set A, which is in this case is an open interval, is an open set. Whereas if A is equal to 0 open and 1 closed, then for X is equal to 1, we cannot find any open sphere with center at X equal to 1 which lie in A. Since S epsilon 1 will be equal to 1 minus epsilon and 1 plus epsilon. So this 1 plus epsilon is the portion actually, if this is 1, then 1 plus epsilon is somewhere here. It is beyond the set A. This part is outside the set A. This is not contained in, if this 0, 1 is the set, then this part 1 minus epsilon will be somewhere here, 1 minus epsilon, but 1 plus epsilon is on the right hand side and it is outside the set A. So however small epsilon we may choose, but still 1 plus epsilon go beyond this one, and this part becomes outside of the set A. Therefore the set A, if it is open on 0 and 1 closed on 1, it will not be an open set. A set is open if for every element of the set we can find an open sphere which must be contained in the set A. In terms of this set 0 open and 1 closed, because 1 is also a member of the set A, therefore the open sphere about this point will not lie inside A. It is not contained in A. Therefore we cannot find any open sphere with center at 1 and radius R however small may be, which should be contained in A. Therefore the set is no more open. Open कब होगा? जिस वक्त तमाम के तमाम पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकें और वो ओपन स्फीयर उस सेट के अंदर लाई करता हो. अगर बिल फर्ज एक सेट ए के हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ओपन स्फीयर फाइंड कर सकते हो जो कि कंटेंट करते हो सेट ए में, लेकिन अगर एक मेंबर ऐसा है जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा ओपन स्फीयर ना फाइंड किया जा सकता हो जो कि ए के अंदर लाई करे, तो फिर ये सेट ओपन नहीं होगा. ओपन होने के लिए इस सेट के तमाम मेंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ओपन स्फीयर्स फाइंड कर सकते हो जो कि विद इन दिस सेट लाई करते हो. ओके, हम एग्जांपल 2 में R2D को मीट्रिक स्पेस को लेंगे और इन R2D में जो मीट्रिक हम डिफाइन करेंगे वो यूजुअल मीट्रिक होगी. आपको मालूम है कि R2 में यूजुअल मीट्रिक जब ली जाती है तो डिस्टेंसेस जो होते हैं वो
वो यूजुअल डिस्टेंसेस कंसीडर होते हैं ऑन R2, देन द ओपन डिस्क विच इज गिवन इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1 इज एन ओपन सेट. सो हम वेरीफाई करेंगे कि ये ओपन डिस्क जो है ये ओपन सेट है. सो x एक्सिस R2 में this is given, this is equal to R, and here y axis is again given is equal to R, and the set U is defined over here is an open disk. This is the set U. This U is the set of elements x y belonging R2 such that x square plus y square is less than 1, or it is the same thing as x minus 0 square plus y minus 0 square and its positive square root, this is less than 1. So this is how it is given. We have to verify that this open disk is an open sphere. This open disk is actually, this U is actually, this is a open sphere with radius 1 and center at the origin. Remember, this center is in R2, therefore this 0 is actually equal to 0, 0. This is over here. This is actually 0, 0. And this radius is given, this is equal to 1. We have to verify that this S10, S100 actually, which is equal to U in this case, is open set. It means that for this we need to show that for each P belonging U there exists some R greater than 0 such that this open sphere with center at P and radius R is contained in U. If we are successful in showing this relation, then this will imply that U is an open set. So this is by the definition of the open set. So this part is what we need to verify, that for every P belonging U, if we can find a radius R greater than 0 such that this open sphere with center at P and radius R is inside U, then we can conclude that this U is an open set. So to prove this relation, we consider, we let that this P is equal to xy is an arbitrary point of the set U, which is obviously we know is open sphere with center at the origin. Let R1 be equal to 1 minus d of 0 and P. Here we are taking any point P. Look, if this is the point P, then this is a distance between 0 and P. This is a distance between 0 and P. This is a distance between 0 and P. And we are taking this R1 is equal to 1 minus d of 0 and P. So obviously this will be greater than 0. Then very clearly this is greater than 0. We show that the open sphere with center at P and radius R is contained in U. If we are successful in showing this relation, it means that corresponding to every point of U
every point of U, we can find an open sphere which is lying inside U. Now to prove this relation, we take a point of this set to prove SRP, an open sphere with center at P, radius R, is contained in U. Let us take P naught a point of SRP. If we can show this P naught also belongs to U, then it means that every point of the set SRP is also a member of set U, goya ke SRP is contained in U. So let's let this P naught, because it is an element of actually SRP, let this P naught be equal to, with the components X naught and Y naught. We show that this P naught belongs to U. This is X naught and Y naught. Since this P naught belongs to SRP, this is equal to SR. What is P? P is an ordered pair XY, so this is XY. It means distance between P naught and P, distance between P naught and P is less than R. This implies, let's consider D of P naught 0. By triangular inequality of metric spaces, this can be written as D of P naught P plus D of P 0. Now D of P naught P, as you know, D of P naught P is less than R, so this inequality becomes less than R. Distance between P and 0, that is distance between P and 0, can be taken from this equation 1, that is D of 0P is actually equal to 1 minus R. So this is plus 1 minus R. This is by equation 1. And here we cancel these two R, and we notice that this distance of P naught 0 is less than 1. So whenever the distance of a point from 0 is less than 1, this implies that this P naught belongs to sphere with center at origin and radius 1, that is equal to U. So this implies, so what we have done, we have taken a point from SRP, open sphere with center at P and radius R, and we have shown that this point belongs to U. This implies that SRP is contained in U. This implies for every P belonging U, we can find R greater than 0 such that
this SRP is contained in U. This implies U is an open set. So this completes the verification that in R2 with usual distances, open disks are open sets. Now this is what you have to remember, that open disks are open sets. Right. Dear students, let's take another example. In this case, we are taking X, a non-empty set, and we are taking a discrete metric on X. You are already familiar that discrete metric is defined by from X cross X to R. It is defined by the relation that dxy is equal to either 0 or 1. If X is equal to y, then dxy is equal to 0, but if X is not equal to y, then dxy is equal to 1. So here we are given discrete metric on X, and U be any non-empty subset of X. Here we are given a XD, a metric space, non-empty set X, together with the distance function D, where the distance function is a discrete metric. This is a discrete metric. The distances are measured by this particular formula. Then we have to show that this U is open in X. So any arbitrary U which is lying in this set X, we have to show that this set is open. To show that U is open, we have to show that every element of U, we need to show that for each X belongs to U, there exists some R greater than 0 such that the open sphere with center at X and radius R is contained in U. If this happens for every X belongs to U, then this U is open. So let X belongs to U be an arbitrary point. This is any point of the set U. And let's take 0 is less than R and this is less than 1. If we take the radius, naturally we have to take it greater than 0. So this is greater than 0 but less than 1 we are taking. Then by the discrete space we know that the open sphere of the point X with radius 1 is the set X itself. So this is what we already have discussed. So this implies, and this is obviously contained in U because this X we are taking originally point from U, therefore this is contained in U. That is for each X belonging U, we have R less than 1 such that this SRX, which is a singleton set, is contained in U again. This implies U is an open set. Right. Remember, dear students, if U is open set in a metric space XD, then every X belongs to U, we can find a real number R,
greater than 0 such that SRX is contained in U. The second thing which you need to remember is how to prove A is a subset of B. How to prove that A is a subset of B for two subsets A, B of a matrix space XD. So what we do is we take an arbitrary point, of the set A and show that this point also belongs B. So this will give, that is, A is subset of B. That is, for each X belongs to A, we can show by certain logic that X belongs to B. It means A is a subset of B. So this will be the procedure of showing, this will be the logic of showing that A is a subset of B. We will take an arbitrary point of the set A, and by the given logic we will prove that the point is also a member of B. It means every point of A is also a member of B. It means A is a subset of B. And to prove that A is equal to B for any two subsets A of a matrix space, so first we will show that A is a subset of B, and then we will show that B is a subset of A. These together implies that A is equal to B. So this will be the short logical procedure by showing the equality of sets, or A is a subset of the set B. Let's take the first theorem. Let XD be a matrix space, then phi and X are open sets. So in a matrix space we will show that the empty set and the ground set are always open sets. This is what we have to remember now. किसी भी matrix space में जो empty set होता है और जो ground set होता है वो हमेशा open sets होते हैं. Proof. To prove that phi is open, जब भी किसी सेट को ओपन शो करना हो तो हमने ये शो करना होता है कि उस सेट के हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ओपन स्फीयर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि उस सेट के अंदर लाई करे. अब फाई को ओपन शो करने के लिए हम देखते हैं कि फाई का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके अबाउट अगर ओपन स्फीयर लिया जाए तो वो इस सेट फाई के बाहर लाई करे. सो इसको हम यूं लेते हैं कि टू प्रूव दैट फाई इज ओपन वी हैव टू शो दैट ईच पॉइंट ऑफ फाई इज अ सेंटर ऑफ सम ओपन स्फीयर विच इज कंटेन्ड इन फाई, एंड सिंस देयर इज नो एलिमेंट इन फाई देयरफॉर द कंडीशन इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, हेंस फाई इज ओपन सेट. एक्स को ओपन शो करने के लिए एक्स इज क्लियरली ओपन बिकॉज every open sphere centered on X of its points must be a subset of X. आपको खूब पता है डियर स्टूडेंट्स कि जिस वक्त हमारे पास ये सेट X है, दिस इज अ मैट्रिक्स स्पेस X, इस सेट में हम जो भी पॉइंट लेंगे इस पॉइंट के अगेंस्ट जो ओपन स्फीयर होगा वो डेफिनेटली इसके अंदर ही लाई करेगा. चूंकि ओपन स्फीयर की क्या डेफिनेशन है, एस आर एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स बिलोंगिंग एक्स. ओपन स्फीयर में जो पॉइंट लिए जाते हैं वो एक्स से बाहर होते ही नहीं है, वो एक्स के अंदर ही होते हैं. लिहाजा जो भी ओपन स्फीयर एक्स के जिस पॉइंट के अगेंस्ट भी ओपन स्फीयर लेंगे वो वापस एक्स के अंदर ही लाई करेगा. फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग एक्स ओपन स्फीयर विल लाई. इट मीन्स एक्स इज एन ओपन सेट. ओके,
Let's consider the second theorem. Here XD be a matrix space, then each sphere is an open set, then each open sphere is an open set. So XD इस केस में हमें matrix space दी हुई है, this is a matrix space, और हमने ये प्रूव करना है कि इसमें हम जो भी ओपन स्फीयर लेते हैं, so this is assume that this is a matrix space XD, और हमने प्रूव ये करना है कि इसमें हम जो भी ओपन स्फीयर लेते हैं वो ओपन सेट है, then each open sphere is an open set. अगर हम किसी एक ओपन स्फीयर को ओपन सेट शो कर देते हैं तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि फिर हर ओपन स्फीयर जो है वो ओपन सेट होता है. लिहाजा एक ओपन स्फीयर लेते हैं, इसके लिए एक पॉइंट x0 को फिक्स करते हैं और शो करते हैं कि ये जो ओपन स्फीयर है, दिस इज एन ओपन सेट. सपोज दिस इज एन ओपन स्फीयर विद सेंटर एट x0 and radius r. Suppose this is an open sphere with center at x0 and radius r. Let x0 belongs to x and r is greater than 0. Then the open sphere with center at x0 and radius r is S R x0. This is a collection of those elements of x whose distance from x0 is less than r. We show that this r x0 is an open set. So this is our target. We show that this SR x0 is an open set. Now to prove this an open set, let's take an arbitrary point x of this SR x0. Let x belongs to SR x0. It means distance between x and x0 will be less than r. So because this x belongs to this open sphere, therefore the distance between x and x0 will be less than r. We have to prove that SR x0, this is SR x0. We have to prove this open. It means we have to show that every point of SR x0 has an open sphere which is lying inside SR x0. Dear students, हम ये शो करना चाहते हैं कि SR x0 ओपन सेट है, तो हमें मालूम है कि कोई भी सेट उस वक्त ओपन होता है जब उसके हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन स्फीयर फाइंड किया जा सके जो कि इस SR x0 के अंदर लाई करता हो, तो फिर ये SR x0 ओपन सेट होगा. सो x मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है और मैं देखता हूं कि क्या मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ओपन स्फीयर फाइंड कर सकता हूं जो कि इस सेट SR x0 के अंदर लाई करता हो. मैं लेट करता हूं, अस्यूम करता हूं कि R1 इज इक्वल टू R माइनस डिस्टेंस बिटवीन x and x0. So this will imply
d of x naught, this will imply that d of x naught is equal to r minus r1. So let's call this equation 2. So this gives that r1 is greater than 0 to show that SR1X is contained in SRX0. Let y belongs to SR1X. This implies, because this y is present in the open sphere SR1X, this implies distance between y and x is less than r1. This is, say, equation number 3. From triangle inequality, we have, so what we are doing here, we have x naught. हम इस SR x naught को ओपन शो करना चाहते हैं. इसको ओपन शो करने के लिए हमें शो करना है कि इसके हर पॉइंट के अगेंस्ट हमारे पास एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है. वो ओपन स्फीयर हमने शो करना है कि वो इस SR x naught में लाई करता है. लिहाजा इसका हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट x ले लिया है. हम ये शो करना चाहते हैं कि ये ओपन स्फीयर जो है SR x, ये एक हमारे पास ओपन स्फीयर ऐसा आता है जो कि इसके अंदर लाई करता है, SR x के अंदर. लिहाजा इस x के अबाउट हमने रेडियस r1 एक चूज किया है. अब ये शो करने के लिए कि ये SR1x is contained in, to show that SR1x is contained in SR x naught, हम इसका फिर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं y और शो करते हैं कि ये y बिलोंग करता है, शो करते हैं कि ये y बिलोंग करता है, ये y बिलोंग करता है. हमने इसका एक पॉइंट लिया है और शो करना चाहते हैं कि ये y बिलोंग करता है SR x naught को. अगर ये y SR x naught को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सारे का सारा सेट है SR1x, ये SR x naught के अंदर लाई करता है. Dear student, this is important logic. मैं आपके लिए इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये ओपन स्फीयर SR x naught ओपन सेट है. इसके लिए मुझे ये शो करना है कि इसका हर पॉइंट के अगेंस्ट हम एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकते हैं जो कि इस SR x naught के अंदर लाई करता है. ये बात प्रूव करने के लिए हमने इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट x लिया है. इसका हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट x लिया है. हम ये शो करना चाहते हैं कि SR1x इस SR x naught में लाई करता है, तो हम इस SR1x का एक आर्बिट्ररी पॉइंट y लेते हैं, एक और पॉइंट y लेते हैं और ये शो करना चाहते हैं कि ये y बिलोंग करता है SR x naught को. जब ये शो हो गया कि ये y बिलोंग करता है SR x naught को, तो इसका मतलब ये होगा कि इस सेट का जब भी कोई पॉइंट लेते हैं वो SR x naught को बिलोंग कर जाता है. गोया कि SR1x कंटेन करता है, कंटेन्ड है इन SR x naught में. So by triangle inequality we have d of y x naught. By definition this is less than or equal to d of y
x plus d of y x plus d of x x naught. By equation 3, d of yx is less than r1. So this is less than r1 by equation 3, and plus by equation 2, d of x x naught is equal to r minus r1. So d of x x naught is equal to r minus r1. Here we are using by equation 3 and equation 2. So r1 and r1 are cancelled over here, and this gives that d of y x naught is less than r. This means that this y is a member of open sphere with center at x naught and radius r. This implies that SR1x is contained in SR x naught. This gives that SR x naught is an open set, because whenever we choose a point in the sphere SR x naught, we can find an open sphere with center at x and radius r1 such that this open sphere is contained in the open sphere SR x naught. Therefore, this open sphere SR x naught is an open set. So this completes the proof. Dear student, theorem 3 में हमें आर्बिट्रारी मीट्रिक स्पेस एक्स डी दी हुई है, और इसमें स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन if and only if it is the union of open sets. So it has two proofs. First, we assume that let G be an open set. We prove that G is union of open spheres. If G is empty, if G is equal to phi, if this is empty, then G is regarded as union of the empty class of open spheres. If this G is non-empty, then since G is open by hypothesis, this implies for each x belonging G there exists r greater than 0 such that SR x is contained in G, or this G is equal to union of
X belonging G S R X, that is, the G is union of open sphere. This completes the proof of the first part. Conversely, let G be a union of open spheres. We will prove that G is open. We will prove that G is open if the union is empty, then G itself is empty, and therefore G is open. If union is non-empty, then X belongs to G, which is equal to union of open spheres with some radius, implies there exists some open sphere of the point x naught with radius r, such that this x will belong to this open sphere. So this implies this open sphere for some x naught belonging G. But every open sphere is an open set. That is, there exists R1 greater than 0 such that S R1X is contained in S Rx naught, which is contained in G. So this gives that S R1X is contained in G. That is, corresponding to the point X, we can find an open sphere which is contained in G. This gives that G is an open set. This completes the proof. So with the help of this example, we notice that union of, whenever G is open, it is union of open spheres of all its points, and if G is union of open spheres of all its points, then it is an open set. Dear students, आज के लेक्चर में हमने ओपन सेट को डिफाइन किया, हमने इसकी चंद एग्जांपल्स को कंसीडर किया, और हमने थ्योरम में प्रूव किया कि किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में
एम्प्टी सेट फाई और ग्राउंड सेट एक्स ओपन होते हैं, और हमने फिर ये प्रूव किया कि अगर कोई सेट किसी मीट्रिक स्पेस में ओपन है तो फिर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, और अगर किसी मीट्रिक स्पेस में किसी सेट G को यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स में लिखा जा सके तो फिर वो सेट ओपन होगा। तो आप इस लेक्चर से रिलेटेड डेफिनीशन और एग्जांपल्स और इन थ्योरम्स को प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ओपन सेट से रिलेटेड चंद एक और थ्योरम्स, रिजल्ट्स और एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू।